Hello students. So in today's video we will talk about glycolysis. So glycolysis होता क्या है? ग्लाइकोलिसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है। तो जब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है हमें पाइरूवेट एंड लैक्टेट मिलता है डिपेंडिंग अपॉन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इफ ऑक्सीजन प्रेजेंस में रिएक्शन होता है देन विल गॉट pyruvate. If it will carry out absence of oxygen, then we got lactate. So glycolysis is nothing but this is a sequence of reaction converting glucose to pyruvate lactate with the production of ATP. So during this conversion बेसिकली क्या होता है ना आपका एटीपी प्रोडक्शन होता है अपॉन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। जैसे मैंने बोला ऑक्सीजन प्रेजेंस होगा तो आपका पाइरूवेट फॉर्मेशन होगा और ऑक्सीजन एब्सेंट होगा तो आपका लैक्टेट फॉर्मेशन होगा। दिस इज बेसिकली कैरिड आउट। कहाँ पे ये कैरिड आउट होता है? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपका सेल के साइटोप्लाज्म में कैरिड आउट होता है। Why? Because the most of the enzyme present in cell cytoplasm. Okay, all the enzyme involved in the process and present in cytoplasmic fraction of the cell. Glycolysis is a major pathway of ATP synthesis in tissue lacking mitochondria. जिस टिश्यू में आपका माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट है उस केस में ग्लाइकोलिसिस एक मेजर पाथवे जैसा काम करता है। एग्जाम्पल योर एरिथ्रोसाइट, cornea and lens. Glycolysis is very essential for the brain which is depend on glucose for energy. This is very important in case of brain because brain जो है आपका brain में ज्यादा amount of glucose चाहिए होता है। Okay, so glycolysis in anaerobic condition that is means absence of oxygen. So आपका दो lactate formation होता है और दो एटीपी फॉर्मेशन होता है। सो ग्लाइकोलिसिस इज डिफाइंड एज ए दिस इज ए सेंट्रल मेटाबॉलिक पाथवे। ये क्या है? ये एक सेंट्रल मेटाबॉलिक पाथवे है which is with many of intermediates providing branch point of other pathway. Thus intermediate of glycolysis use आपका देखो क्या होता है ना जब ग्लाइकोलिसिस में बेसिकली क्या होता है एक लाइन में मैं आपको समझाऊं तो ग्लूकोज से पाइरूवेट फॉर्मेशन होना को पाइरूवेट और लैक्टेट प्रोडक्शन होना प्रोसेस को हम ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस दिस इज बेसिकली ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ओके, सो उस प्रोसेस में आपका बहुत सारे इंटरमीडिएट सिंथेसाइज होता है जो कि आपका अमीनो डिफरेंट टाइप ऑफ अमीनो एसिड सिंथेसिस में हेल्प करते हैं एंड फैट सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। ओके, सो ग्लाइकोलिसिस जब जैसे ग्लूकोज से पाइरूवेट होना आपका हो गया क्या? ग्लाइकोलिसिस। पाइरूवेट से ग्लूकोज होना ये प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ग्लूकोनियोजेनेसिस। सो ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है? ग्लूकोनियोजेनेसिस बेसिकली डिफाइंड एज द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज, सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम कहां से सिंथेसाइज होगा? फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स, फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स। This is called as gluconeogenesis. So glycolysis in erythrocyte leads to lactate production. Since mitochondria is the central for aerobic oxidation are absent, so brain, retina, skin, medulla, GI tract derive most of the energy from the glycolysis. Then lactic acidosis. So what is lactic acidosis basically? So lactic acidosis is a mild इसका माइल्ड फॉर्म भी होता है और सीवियर फॉर्म। माइल्ड फॉर्म इज एसोसिएटेड विद जब आपका बहुत स्ट्रेनस एक्सरसाइज कर रहे हो, कंटिन्यूअसली एक्सरसाइज कर रहे हो, शॉक केस में, रेस्पिरेटरी डिजीज के केस में, कैंसर के केस में, लो पाइरूवेट डिहाइड्रोजिनेज एक्टिविटी के केस में, वॉन ग्रीक डिजीज के केस में बेसिकली आपका लैक्टिक माइल्ड लैक्टिक। बट इसका जो सीवियर केस में बेसिकली सीवियर केस इज बेसिकली लीड्स टू मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, uncontrolled hemorrhage and severe shock. Okay, due to inadequate supply of oxygen to the tissue, there is a drastic reduction of ATP synthesis, which may leads to death. Okay, so let's talk about glycolysis. So glycolysis क्या होता है? तो इनिशियल स्टेप में क्या होता है? आपका ग्लूकोज कन्वर्ट होता है किसमें? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। सो इनिशियली ग्लूकोज कन्वर्टेड टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बाय conversion of ATP to ATP. Here one ATP is utilized. Here one ATP is utilized in the presence of a enzyme hexokinase. कुछ कुछ बुक में आपको ग्लूकोकाइनेज लिखा हुआ भी मिलेगा। ठीक है, सो कन्वर्शन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज, हियर 1 ATP is utilized. Then glucose 6 converted is
glucose 6 phosphate is converted to fructose 6 phosphate in the presence of enzyme phosphoglucoisomerase. So किसके प्रेजेंस में ये कन्वर्शन हो रहा है? दिस इज बेसिकली कन्वर्ट इन द प्रेजेंस ऑफ phosphoglucoisomerase. Now fructose 6 phosphate converted to fructose 1,6 bisphosphate. Okay, fructose 6 phosphate is converted to fructose 1,6 bisphosphate. यहाँ पे आपका एंजाइम कौन सा काम कर रहा है? फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज. सो एंजाइम नेम इज फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज. हियर ऑल्सो 1 एटीपी इज यूटिलाइज. देखो 2 एटीपी यहाँ पे ऑलरेडी यूटिलाइज हो चुका है. नाउ दिस phosphofructokinase can convert it to dihydroxyacetone, then dihydroxyacetone converted to glyceraldehyde 3 phosphate. इवन फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट से डायरेक्टली आपका ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट फॉर्मेशन होता है. तो टोटल आपका दो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट आपका फॉर्मेशन हुआ. ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट आपका दो फॉर्मेशन हुआ. दो कहां से? एक तो डायरेक्ट फ्रुक्टोज 1,6 बीस फॉस्फेट से फॉर्मेशन हुआ. एक फ्रुक्टोज 1,6 बीस फॉस्फेट कैन कन्वर्टेड टू डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन. देन डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन से आपका ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट सिंथेसाइज हुआ. नाउ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से आपका क्या सिंथेसाइज होगा? 1,3 बीस फॉस्फोग्लिसरेट. क्या सिंथेसाइज हुआ? 1,3 बीस फॉस्फोग्लिसरेट. आपका एंजाइम यहाँ पे क्या काम कर रहा है? ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज. एंजाइम आपका क्या काम कर रहा है? ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज. नाउ फ्रॉम 1,3 बीस फॉस्फोग्लिसरेट टू कन्वर्ट हुआ किसमें? आपका कन्वर्ट हुआ 3 फॉस्फोग्लिसरेट में. 1,3 बीस फॉस्फोग्लिसरेट से कन्वर्ट हुआ 3 फॉस्फोग्लिसरेट में. ओके, नेक्स्ट 3 फॉस्फेट ग्लिसरेट से कन्वर्ट हुआ किसमें? आपका 2 फॉस्फोग्लिसरेट में. 3 फॉस्फोग्लिसरेट से कन्वर्ट हुआ 2 फॉस्फोग्लिसरेट में. एंजाइम आपका फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज. देन 2 फॉस्फोग्लिसरेट से कन्वर्ट हुआ फॉस्फोएनोल पाइरुवेट इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एनोलेज. एंड फॉस्फोएनोल पाइरुवेट से पाइरुवेट इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम पाइरुवेट काइनेज. सी हियर 1 एटीपी is produced, here 1 NADPH is produced. Okay, as and here another ATP is produced. So as I told you, ये जो ग्लिसरॉल्डिहाइड से ग्लिसरॉल्डिहाइड दो मॉलिक्यूल से फॉर्मेशन हो रहा है. सो नाउ लेट्स कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ एटीपी प्रोड्यूस. सी हियर 1 एटीपी. इफ as I told you all this reaction is carried out in 2x. सो टोटल हो गया आपका, यहाँ पे हो गया 2 एटीपी, यहाँ पे आपका हो गया 2 एटीपी, यहाँ पे आ गया ये एक NADPH. 2 NADPH टोटल फॉर्मेशन होगा. तो 1 NADPH इज इक्वल टू 3 एटीपी. सो टोटल 6 एटीपी. सो टोटल नंबर ऑफ एटीपी प्रोड्यूस इज 6. ये हो गया 4 10. टोटल हो गया 10 एटीपी. 10 एटीपी आपका प्रोड्यूस्ड. 2 एटीपी आपका यूटिलाइज हो रहा है. देखो यहाँ पे एक एटीपी यूटिलाइज हो रहा है, यहाँ पे एक एटीपी यूटिलाइज हो रहा है. 2 एटीपी जो है आपका यूटिलाइज्ड हो गया. सो नेट एटीपी आपका कितना रहा? तो 8. So net 88 is equal to your net 80. This is very very important from the exam point of view. Okay, so total net ATP produced from glucose is 8. By oxidation of glucose by glycolysis is 8. Okay, so here is the calculation. See, glyceraldehyde 3 phosphate is basically produce NADPH. So 1 NADPH is equal to 3 ATP. So 2 NADPH means 6 ATP. Phosphoglycerate का substrate level phosphorylation 2 ATP. 2 ATP 2 ATP शुरू में यूटिलाइज हो रहा है, तो टोटल 8 ATP is produced. So in aerobic condition, hexokinase और glucokinase, phosphofructokinase and pyruvate kinase are irreversible trap. Remember, these three are irreversible traits. Hexokinase is inhibited by glucose 6 phosphate. Phosphofructokinase is your rate limiting enzyme. This is very very important. Your phosphofructokinase basically conversion of glucose fructose 6 phosphate to fructose 1,6 phosphate basically carried out by enzyme PFK, phosphofructokinase. This is your rate limiting steps in glycolysis. ओके, आपका एग्जाम में पूछा है व्हाट इज पास्चर इफेक्ट, व्हाट इज कार्टरी इफेक्ट. सो पास्चर इफेक्ट बेसिकली इनहिबिशन ऑफ ग्लाइकोलिसिस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. इफ आपका ग्लाइकोलिसिस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इनहिबिट हो रहा है, उसको हम बोलते हैं पास्चर इफेक्ट. व्हाट इज कार्टरी इफेक्ट? द इनहिबिशन ऑफ ऑक्सीजन कंजप्शन बाय द एडिशन ऑफ ग्लूकोज टू द टिश्यू हैविंग हाई एरोबिक ग्लाइकोलिसिस इज नोन एज कार्टरी इफेक्ट. सो दिस इज बेसिकली ऑपोजिट टू पास्चर इफेक्ट. सो दिस इज बेसिकली ड्यू टू
कौन सा एंजाइम आपका इनिबिट होता है? आपका पीएफ के एंजाइम, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज एंजाइम बेसिकली इनिबिट होता है। बेसिकली पीएफ के फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज एंजाइम बेसिकली इनिबिटेड ड्यू टू पास्चर इफेक्ट. So if the inhibitory effect of citrate and ATP of phosphofructokinase explains the Pasteur effect. Carter effect is due to increased competition of glycolysis for inorganic phosphate NAD, which limits their ability for phosphorylation. So this is the basic difference between Pasteur effect and Carter effect. So Pasteur effect is basically inhibition of glycolysis in the presence of oxygen. Basically, in the presence of oxygen, basically inhibit the enzyme phosphofructokinase. And Carter effect is just opposite to your Pasteur effect. Another effect is Rapport-Lewberg cycle. Okay, Rapport-Lewberg cycle. This is a supplementary pathway for glycolysis which occurs in the erythrocyte of mans and mammalian. So this is basically occurs in erythrocyte of man and mammalian. This mainly concerned with synthesis of 2,3 bisphosphoglycerate. That's all for today's video. Thank you.